my students. So presently we are learning chapter number 5, materials of daily use. So in first session we have already completed natural things, man-made things, difference between natural and man-made things, then classification. Okay, definition of classification. Classification मतलब क्या है? Grouping. Okay, grouping of materials according to their properties. All right, then advantages of classification. Why we need to do that classification? हमने ये classification क्यों करना चाहिए? So हमने ये materials को classify किया तो it will be easy to identify that पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. हमको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए उसको जल्दी फाइंड करने के लिए हमको ये हेल्प करते हैं. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, देन व्हाट आर द मटेरियल, व्हाट आर द बेसिक मटेरियल्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ, लाइक wood, plastic, metal, glass. These are the basic materials that we are using to build some objects. Okay, so today we are moving to classification based on properties of materials. Okay, classification based on properties of materials. So let us see what are the important properties that we can find on any material. Okay, so the first property is physical state. We are learning that physical state properties from our third class. Like we can divide these materials into three categories, like solid, liquid and gases. Okay, so we will take a quick look on this physical state. First one, solid. solid मतलब क्या है? जो पत्थर जैसे होते हैं वो सभी solid है. So they should have definite shape and definite volume. If you are looking on example like rock, like our eraser, chair, spoon, these are the examples. Liquid मतलब it look like water. जो पानी जैसे होते हैं, that all are liquids and they do not have any प्रॉपर शेप. उसको कुछ शेप नहीं होते हैं. लाइक वाटर, वाटर को देखो, वाटर को कुछ शेप नहीं होते हैं. ओके, एंड बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम. उसको एक डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं. एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. एंड द फाइनल वन इज गैस. गैस को दे डू नॉट हैव एनी शेप और दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम. उसको शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है. इसमें जो मॉलिक्यूल्स सभी फ्री होते हैं. ऑल राइट. So if you are looking on example, air and smoke are the examples of gases. Okay, so that is the first property, physical state. So according to the physical state of any material, we can classify these materials into different categories like solid, liquid, gas, etc. Okay, solid सभी एक ग्रुप में डाल सकते हैं, लिक्विड सभी एक ग्रुप में डाल सकते हैं, गैस सभी एक ग्रुप में डाल सकते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस. ओके, अपीयरेंस मतलब क्या है? हाउ डू दे लुक लाइक. वो देखने में हमको कैसे लगता है. ओके, सो बेस्ड ऑन अपीयरेंस वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस. ओके, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस. सपोज इफ यू आर लुकिंग ऑन मटेरियल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सभी देखे तो सिल्वर देखो, कॉपर देखो, गोल्ड देखो, स्पेशली मेटल्स देखे तो दे विल शाइन. ओके, दे विल शाइन. शाइन मतलब चमकता है, वो सभी मटेरियल्स चमकता है. सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, दैट आर नोन एज लस्ट्रस मटेरियल्स. ओके, देन सम मटेरियल्स लाइक वुड, जूट, दे डू नॉट हैव ए शाइन. उसको कुछ शाइन नहीं होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज non-lustrous. So this is the second classification according to the property appearance. Okay, lustrous एक group है and non-lustrous दूसरा group है. Okay, so however if you are keeping this silver, copper and gold in contact with air and moisture, air में moisture में ज़्यादा टाइम contact में रखे तो क्या हो जाएगा? it will appear dull in nature. बाद में वो बहुत डल हो जाएगा, उसका जो शाइन जाएगा. ओके, सो दैट इज सेकंड क्लासिफिकेशन और सेकंड प्रॉपर्टी अपीयरेंस. सो द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इजी, इट इज द हार्डनेस. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी लर्नड फिजिकल स्टेट,
second we learned appearance, and then here comes the third property, that is hardness. Hardness matlab the strength of that material. So there is hard materials and soft materials. Okay, hard materials and soft materials. matlab we can compress it or we can cut that kind of materials very easily. Like if you are taking cotton, sponge, ये सभी देखिए तो उसको जो कंप्रेस करना और उसको काट करना, ब्रेक करना है, ये सभी बहुत इजी होते हैं. लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग सम अदर मटेरियल्स लाइक वुड, स्टील सभी देखे तो उसको काट करना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होते हैं. ऑलराइट, so this is the classification according to hardness, hard materials and soft materials. alright, hard materials मतलब उसको बहुत स्ट्रेंथ होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स मतलब उसको बहुत स्ट्रेंथ नहीं होते हैं. alright, so the last property, that is solubility. alright, solubility is the last property. Already we discussed that term. It is the tendency or it is the chance of a substance to get mixed in a liquid. जो एक लिक्विड में मिक्स होने का जो सोल्यूट का और वो सब्सटेंस का टेंडेंसी को और उसका चांस को हमने सोल्यूबिलिटी कहते हैं. ऑलराइट, टेंडेंसी और द capacity or the ability or the chance of a substance to get dissolved in the liquid, that is known as solubility. Then based upon solubility we can classify this substance into several type, like soluble है, insoluble है, miscible है, immiscible. okay, so that is the property solubility. So if you are looking on soluble का मतलब क्या है? soluble मतलब soluble substance मतलब क्या है? the substance which will get mixed completely in the water. जो पानी में mix होते हैं, that kind of substance are known as soluble. alright, then insoluble मतलब जो पानी में mix नहीं होते हैं. okay, insoluble मतलब पानी में mix नहीं होते हैं. already we learned these terms in our previous classes, so I am not explaining much. Then here comes miscible liquids and immiscible liquids. okay, that's a new term, miscible liquid and immiscible liquid. miscible liquids मतलब जब हमने एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐड करता है, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग वाटर एंड इफ़ यू आर टेकिंग विनेगर. ओके, इफ़ यू आर टेकिंग वाटर एंड विनेगर एंड वी आर मिक्सिंग इट, तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. यस, इट विल गेट मिक्सड. ये दोनों मिक्स हो जाएगा, वाटर विनेगर के साथ मिक्स होते हैं. सो सच लिक्विड्स आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स को हमने मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग टू मिक्स वाटर विथ पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिक्स करने के लिए देखें तो मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स हो जाएगा. ओके, क्योंकि जो पेट्रोल का जो डेंसिटी डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू वाटर. सो सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स को हमने इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. मतलब जो लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, दैट काइंड ऑफ liquids are known as immiscible liquids. And those kind of liquids which will get mixed with the water, that is known as miscible liquids. all right, then if you are looking on gases, okay, ability of gases to get dissolved in water. if you are looking on oxygen, carbon dioxide, ये सभी देखिए तो it will get dissolved in water. dissolve का मतलब क्या? मिक्स होना. all right, so oxygen, carbon dioxide ये सभी देखे तो ये पानी में मिक्स होते हैं. so ये ऑक्सीजन जो aquatic animals ब्रीथिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? plants use carbon dioxide for photosynthesis. so aquatic plants mainly use this dissolved carbon dioxide inside the water for photosynthesis. okay, अपना खाना बनने के लिए जो aquatic plants ये dissolved carbon dioxide use करते हैं. then if you are looking on some gases like methane, nitrogen, ये gases अभी पानी में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं.
Okay, so this is the session for today. So we learned classification based upon some properties like physical state, appearance, hardness, and solubility. Based upon physical state, we can classify objects into solid, liquid, and gas. Alright, then based upon appearance, how they look like, lustrous and non-lustrous. Lustrous मतलब it will have a shine. Okay, वो चमकता है. ऐसे materials को हमने lustrous कहते हैं, like silver, copper, metal, ये सभी. Non-lustrous मतलब it won't shine. Then based upon hardness, we can classify materials into hard materials and soft materials. Then based upon solubility, soluble substance, insoluble substance, miscible liquids, immiscible liquids. Alright, so we are ending the session today. Thank you everyone.